अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैरियत से और लड़ झगड़ भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने कितने किन्नू खाए? मैंने वन पीस होता है। वन स्लाइस बोला। वन स्लाइस भी खाई है। एक किलो का भी इन्होंने 4-5 फड़क जी दिए। 4-5 खा लिए। कितने खाए होंगे वैसे? गिने? 3-4 तो खाए। फिर भी रौनक नहीं आई चेहरे। कर्जा इतना चढ़ा हुआ रौनक आती नहीं है। तो आप आज कितने खाए? आप अपने तो बता दें। मैंने तो खाए नहीं, सूंघे थे सिर्फ। ये तो छिलके भी खा गए। ये बीज भी खा गए, इनके अंदर एक दरख्त लगेगा। भाई एक वाकया बताऊं कि एक बंदे की आंत में बीज रह गया किसी चीज़ का। अच्छा। बाकायदा उसकी आंत में पौधा उगने लग गया। आंत में ही का अटक गया था, वहीं पे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वो बीज पौधा निकाला। आपको पता है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो वो जो कैंची उसके अंदर चलेगी, पेट के अंदर ही रहेगी। आपको पता है फिर क्या हुआ उसके बाद? वो ऑपरेशन दोबारा किया? नहीं, डॉक्टरों ने नई कैंची ले ली थी। उस बंदे की जिंदगी हराम हो गई। ग्राउंड रिपोर्ट। इनसाइड यूएई फर्स्ट हिंदू टेंपल इन अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेंपल बन रहा है और बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा है मेरे ख्याल में। एक्सक्लूसिव। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। We are 50 kilometers outside Abu Dhabi. The terrain is slowly changing character. The urban jungle is giving way to the rugged desert. At this point, our destination comes into view. It's a lot to take in at first glance. Dozens of scaffoldings, workers lugging things around, artisans hard at work. But through the bustle and confusion, the structure's identity is clear. Anyone who's grown up in India will tell you that's a Hindu temple. And not just any temple, the biggest one in the country, the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. A symbol of harmony between two civilizations and friendship between two countries. It's a story that dates back to 2015. That's when Prime Minister Modi visited the UAE. And back then, the Emirati president gifted him land, more than 17 acres of land on the Dubai-Abu Dhabi highway. 2 years later, Prime Minister Modi visited again for the laying of the foundation stone. And since then, work has been on here. And it's impressive work. The temple uses pink sandstone and marbles. The designs are inspired by Vedic architecture and sculptures. See these carvings and statues? Many of them were made by artisans in India. Once completed, they were shipped here. It's a massive logistical undertaking. The temple is expected to be 108 feet tall. It will require around 40,000 cubic meters of marble, 180,000 cubic meters of sandstone, more than 1.8 million bricks, and of course, a lot of labor. Some 400,000 man-hours until now. I'm guessing many more until the inauguration on February 14th. The design is Indian, the carvings and sculptures are Indian, but this temple is also a nod to its location, the UAE. You see the spire behind me. There are 7 of those. 7 are part of the design, one for each emirate of the UAE, like Abu Dhabi, Dubai and Sharjah. So this is not about planting a new culture in the middle of the desert. It's about a cultural exchange and intermingling, something that India and the Arab world have a history of. So who's building this temple? A Hindu sect called BAPS. They worship their founder Swaminarayan as an avatar of Krishna. BAPS has built around 1,100 Hindu temples around the world. You may know some of them, like the Akshardham in New Delhi, or the newly inaugurated temple in New Jersey. It's the largest Hindu temple outside Asia. These temples are not just places of worship, they build a community around them. The plan here is to make classrooms, exhibition centers, and play areas. More than 50,000 people of all castes, creed, even religion, they have come and laid a brick to be a part of this historic and iconic mandir. It's the first temple in this part of the region in the history of humanity.
And when the entire Hindu community and India as a country is coming together, it's more than that. It's bringing everyone together. It's a signal to the world that we can coexist, we can live with respect and love, and more importantly, harmony is the only future we have. It's a proud moment for the Indian community here. Indian expatriates make up 30% of the UAE's population. The Hindu community makes up around 10% of it. They did have small temples where they would go and offer prayers, but this sprawling complex is more than a place of worship. It's the UAE's way of making them feel at home and welcome. Many high-profile visitors have been here already. India's Foreign Minister S. Jaishankar visited, so have many Bollywood celebrities. They were all bowled over by this architectural marvel rising from the desert. So when can you visit this temple for prayers? Well, the inauguration is slated for February 14 this year. It's supposed to be a massive event. The temple authorities are calling it the Festival of Harmony. It will begin on the 10th of February with participation from the local Indian community. The opening itself is on the 14th of February, a grand 2-hour-long ceremony. But for now, it's time to head back. When we first saw this temple from a distance, it looked out of place, a glitch in this desert ecosystem. But after spending time here, after studying the backstory and the project mission, one thing is clear. This temple may look out of place, but it's exactly where it should be, standing as a symbol of cooperation and harmony between two very different countries and cultures. जी जनाब, अच्छा ये यूएई में टेंपल बन रहा है, कल इनका इफ्तिताह है 14 फरवरी को 2024 और ये आज हम एक दिन पहले वीडियो कर रहे हैं। हाँ, अभी इसका चीज़ है ना, अच्छा ये तो पुरानी वीडियो लग रही है, जाहिर है कुछ, ठीक है ना। तो इससे पहले अब अच्छा खासा काम हो चुका है, बस फिनिशिंग रह गई थी कल परसों, उसके बाद अब तो इफ्तिताह ही है ना, बस सब पर सारा मामला तो ये है कि एक मुस्लिम कंट्री और वहाँ पे हिंदू टेंपल बन रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये आप ये बताएं। एक ज़माना था जब वो तो भी तोड़े जाते थे मंदिर भी लेकिन अभी देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि जैसे कि कई अदर कंट्रीज जैसे गोरों के हैं हिंदुओं के हैं जैसे, तो वहाँ पर भी मसाजिद हैं, तो अगर नहीं होंगी तो जाहिर है ये तो इबादतगाह के तौर पे उनके लिए है। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा तो ये इस लिहाज से तो गलत नहीं। और दूसरी बात कि जिस तरह से ये बनाया गया है, ये तो एक जैसे वो जाते हैं स्पेशल एक प्लेस होती है, जैसे कि अब मुसलमान भी तो जाएंगे यहाँ पर विजिट करने, ऐसे विजिट करने भी जाते हैं, तो इस लिहाज से भी अच्छी एक डेवलपमेंट है और इंडिया वालों के लिए, हिंदुओं के लिए एक अच्छी चीज़। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। हाँ, बड़ी कम्युनिटी है इनकी वहाँ पर इंडिया में। अच्छा, इस टेंपल को कह रहे हैं कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदू मुल्क के दरमियान में मोहब्बत दोस्ती बढ़ेगी। इसका ये मैसेज भी जैसे कि लोग आते हैं ना वहाँ पर घूमने फिरने के लिए और आते फिर हैं, दुबई ये तो- सारी चीज़ें होनी चाहिए सबकी इबादत के, जैसे हम मुसलमान हैं, मस्जिद हैं, हिंदू के, सब चीज़ का क्रिश्चियन वगैरह, ये सबसे अच्छा बेस्ट है कि लोग वहाँ पर जाए भी, इंजॉय भी करें और अपने अपने मज़हब का, उसमें रोक टोक नहीं है यहाँ पर। अच्छा हाँ, ये चीज़ है कि हिंदुओं के धर्म में मतलब सबके लिए उन्होंने इंतजाम ऐसा ही होता है कि हिंदू होना चाहिए, टेंपल्स में जाने की इजाज़त सबको होती है। और एक और बात, दुबई में जहाँ इतना जिसका कुछ जो हो रहा दिल कर रहा है वो कर। हाँ। वही तो वैसे ही सब कुछ है, मिक्स है ना। गोरों के लिए वो जाहिर सी बात है कि वो सैर सफरी के लिए बना हुआ मुल्क है, सही है ना, क्योंकि इस वक्त उनका फोकस डेवलपमेंट है, तरक्की है, इनकम है, पैसा कमाना है, वो टूरिज्म के ऊपर ही कमा रहे हैं सारा। टूरिज्म बिल्कुल ऐसा ही है, दुबई का तो है, तो फिर जहाँ सबके लिए तो फिर वहाँ ये भी और पता है आपको, आने वाला वक्त फ्यूल खत्म हो जाएगा दुनिया से, फ्यूल पे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आज पेप्सी डाला करेंगे, नहीं इलेक्ट्रिक, बिजली से चीज़ें चलेंगी, गाड़ियाँ बिजली वाली आ रही हैं दुनिया में भी हैं। हाँ, लेकिन आने वाला 2-4 साल, 10 साल, 15 साल बाद दुनिया से फ्यूल के रिप्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। सही। तो इस वक्त ये जो जितने भी अरब कंट्री हैं, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं और लगाना शुरू कर दिया है। आपको पता है सऊदी अरब इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपकी सोच है, कर रहा होगा ये, ठीक है ना। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहा कि मामला आपको पता है कि कहते हैं कुवैत वालों ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज वो पैसा गायब हो गया है, पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट कहाँ गई। तो अब मजीद लोग कारोबार किसी ने शुरू भी करना, यहाँ पर रिश्वत ही इतनी ज़्यादा लेते हैं कारोबार शुरू करने से पहले, तो वो बंदा बेचारा क्या यहाँ पे करेगा। खैर, तो ये है कि जाहिर सी बात है फ्यूल का रिप्लेसमेंट अब इन्वेस्टमेंट है,
दूसरे कल कंट्रीज में। इसका जब भाई होगा बहुत ज़बरदस्त कर दिया, एक एक चीज़ बारीकी से बनाई अच्छा, है, बहुत ये बारीकी से और बनाया, आर्ट का ये काम। है, ये जितनी भी ऐसे ही। फुटेज जो भी है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस मतलब टेम्पल में मेहनत ना, बहुत है। हाँ, इस टेम्पल में मेहनत उन्होंने वाला अपना काम अपनी किया है। अपनी और हिस्ट्री लोग दिखाई। यही सब चीज़ देखने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं व्लॉग बनाने के लिए, कोई देखते हैं ये ज़बरदस्त चीज़ है, हाँ। तो लोग आते हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, एक अच्छा लग रहा होता है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत और मेहनत किया ये गया अभी इसमें, जब बहुत बन मेहनत जाएगा, किया गया। सॉरी इफ्तार जब हो जाएगा इसका हाँ। कल, तो फिर तो उसका उसके वीडियो बाद भी बना- हम एक हाँ, करेंगे इसके ऊपर कि करेंगे। कैसा रहा, तो आप अगर कमेंट के जरिए बताएंगे बताया बताएंगे। दीजिएगा तो लास्ट में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।